या गुड आफ्टरनून शर्मा जी। वेलकम। आपने देखा मार्केट आज बहुत बड़ा कट के साथ ओपन हुआ। डिस्कस इन द मॉर्निंग में जैसे हमने बात किया था, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट अगर आप मानते हो तो एक आध दिन के लिए शांत भी बैठ सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन इट। सो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट नेक्स्ट। सी ये जो मार्केट है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल पुट माय मोबाइल ऑन साइलेंट। ये अनसर्टेनिटी का दौर है, इसे इवेंट ड्रिवन मार्केट्स। सो एक चीज हम आज करने वाले हैं, सो विच विल गिव यू सम आंसर्स टू द क्वेश्चंस जो आप मुझे बोल रहे हो। इज माय स्क्रीन क्लियर, ऑडियो क्लियर? हाय डेटी ट्रेडर, हाउ आर यू सर? ग्रेट टू सी यू। Yes. Is my screen clearly visible? Okay. So I'll just spend 2 minutes. See, as a trader, what you have, आपके पास क्या है, जब अनसर्टेनिटी आती है तो एक साइकिल्स चलती है मार्केट में। सो अब अगर हम साइकिल ले ले कोविड की, so before we go, let me put the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute a financial advice. So the plan I have prepared, बट बिफोर द प्लान एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, बिकॉज सबके मन में मार्केट कहाँ तक जाएगा, अनसर्टन टाइम्स है। सो कोविड का लो अगर हम लेते हैं तो देयर आर डोमिनेंट साइकिल्स इन द मार्केट। जब हम साइकिल की बात करते हैं, एक बार नया हाई बनता है तो हाउ मच मार्केट्स करेक्ट्स। सी ओवर हियर मार्केट करेक्टेड क्लोज टू, आई वुड, चलो 18%। in between you had a smaller cycles of correction after hitting an all time high. This correction, ये जो correction था मार्केट में, which was 11%. After that, market hit a all-time high. Again, it corrected 7%. Then फिर से एक big cycle आया correction का, and this cycle was close to, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये cycle, just give me a minute, मैं scale के अंदर में ले आता हूँ measuring tools. This cycle corrected 18%. So now, roughly, are you getting an estimate of where the short-term and the medium-term corrections in the markets are, the depth? Everybody give me a yes or a no. See, these two cycles are around 10%, remaining is 18%. Right. So right now, अगर हम देखते हैं मार्केट में, तो मार्केट जो करेक्ट किया ऑल टाइम हाई के आसपास से, सो वी आर राइट नाउ, आज का अगर लो भी हम ले लेते तो वी हैव करेक्टेड 10%। तो ये जो शॉर्ट टर्म साइकिल है, दैट्स ओवर नाउ। देखते हैं वेदर दिस विल गो इन डीपर एंड गो इनटू द टू साइकिल्स विच, जो मीडियम टर्म साइकिल्स हम देख रहे हैं 17-18% की, वहां तक मार्केट लेके जाएगा। सो दैट we have to wait and watch. We follow the markets on a daily basis. All the short-term cycles, 7 to 10% has been hit today. So now, have I answered all your questions? Say, आपके पास या मेरे पास, other than cycle study in context of price declines, we don't have any other tools when there are events in the markets, and the decline जो है market में, it's not a technical correction. Yeah, technical is there, prices are going down, but it's a event based which is pushing the prices down. Everybody clear what do you mean by the cycle study on short and medium term? Short term was today's low, आज का low टूटता है तो probably we are heading further low. Keep this in mind, day trader. This is a simple technique called cycle study. Cycle study in context of price. So we are done. Now let's go to today's sessions. निफ्टी सी द ट्रेंड इज डाउन, आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। द चार्ट कैंडल पैटर्न्स टू मी विल नॉट मेक एनी सेंस इवन इफ इट्स अ हैमर और अ हैंगिंग मैन, बिकॉज आज का गैप अगर कैंडल में ऐड कर दो, सो विच आई जनरली डू, सो इट्स, आई डोंट लुक एट कैंडल्स इन आइसोलेशन व्हेन इट डिक्लाइंस ऑन अ पैनिक लेवल। आज का गैप ऐड करके मैं कैंडल देखूंगा तो academically it's a hammer, but it does not qualify if I add into the gap. अगर मार्केट में रेजिस्टेंस देखे तो 24,290 का है, सपोर्ट 23,697 और 23,424 का है।
टेक्निकल स्टडी अब आपको जो फॉलो करना है दैट इज आरएसआई. बोलिंगर बैंड हैज सर्व इट्स पर्पस, मूविंग एवरेजेस हैव सर्व इट्स पर्पस. आरएसआई हम इसलिए कर रहे हैं कि देखने के लिए ऐसा मार्केट कितना ओवरसोल्ड हो सकता है. सो लेट्स गो एंड डू अ चार्ट चेक ऑन द निफ्टी. सो लेट्स से अगर कोई बोलेगा हैमर है, बुलिश है, फाइन, इट इज इन दिस. अगर मैं आज का ओपनिंग भी ये कैंडल में ऐड कर लूं तो इट्स लुकिंग मी वेरी वेरी रेड. नाउ गेटिंग इट एवरीबडी. So there are at times and uncertain times, so I do follow this. Otherwise, so background I'll make it red. Now clear everybody. This is daily candle. Gap has to be added into the daily candle. So ये एक market यहाँ पे आके रुका आज. It hit the low. Now let's see what next, because such a markets can keep on going down till we don't get a positive divergence in RSI. देखिए यहाँ भी मार्केट पुश डाउन कर रहा था एंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. रिमेंबर वन थिंग, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड. ओवरसोल्ड चाहे आप 20 का लेवल डालो, चाहे आप 30 का लेवल डाल दो, ओवरसोल्ड इज नॉट अ रीजन दैट मार्केट शुड रिवर्स फ्रॉम दैट. गेटिंग माय पॉइंट? Oversold is an indication के in a short term it has been oversold itself, but such markets we wait for confirmation. Confirmation will be cross above the 7 period average on the RSI, or a positive divergence, or a price pattern confirmation. Or market can keep on pushing lower. अगर यहाँ पे देखो तो it was oversold over here. After being oversold also, market if you see यहाँ पे it declined further 3 to 4%. So oversold, just keep a note of it. And now daily we will be checking the oversold situations as far as the broad markets are concerned. So it's now around 30 है. See such highly oversold markets, अगर मैं setting यहाँ पे change कर दूँ, so instead of 30-20 I'll go to 20. So still it's far away from oversold. Getting my point? Such markets 20 setting would be good. So markets are oversold, but as I just now said, over अगर weak trend जो रहती है oversold में keep on pushing down. So that's nifty. नाउ अगेन फिर आपको जो पहले से हम फॉलो कर रहे थे, इफ यू कैन रिमेंबर चैनलिंग टेक्निक्स, वी आर कमिंग बैक टू द चैनलिंग टेक्निक्स. हो क्या रहा है? मार्केट गैप्स डाउन, दैट मींस द ओपनिंग वाज एन एग्जॉशन, which means जितना गिरना था वो खुलते गिर गया, and then it gave a steady pullback throughout the day. और कल एक्सपायरी भी है, keep that in mind. So now ऐसा जो मार्केट है which takes a pause, halt or a breather and climbs during the day after a very very weak decline, always it takes the shape of a channel. जैसे मैंने कहा है, as a day trader or day to day you have to actively apply channels. So here if I take this low, extend it, यहाँ पे एक channel बन रहा था, so let me just extend it, and the moment the channel breaks again the decline started. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो today's move was a grind का मतलब है slow and steady. I'm taking today's high as a channel. So now everybody follow the markets on the channels. And another thing which I had mentioned it, don't ignore your VWAP, which is a volume weighted average price. So it's not the moving average. Let me get the VWAP. So how many of you have started using VWAP? कितने जन VWAP यूज करना स्टार्ट कर दिया? Because I said अगर आप डे ट्रेडर हो तो VWAP आपके स्क्रीन के सामने होना चाहिए. You can't ignore a VWAP, especially in such markets where the spikes are also after a strong decline, a decent one. So what happens is अगर मैं 5 मिनट पे VWAP डाल देता हूँ, so once it consolidates and break the VWAP, there is a minor short covering out there in the markets. So Gairak, Rajiv, so see, VWAP will not be in any platform other than TradingView, but VWAP in our Stocko platform or any platform will be there on futures. So let's see, this is a very important thing. I might extend the time today, but VWAP आपको Nifty March futures, आपको VWAP futures में मिलेगा. Rajiv, Rajan, is it clear? Rajan Vakil?
You have to now apply VWAP. Simple as that. And VWAP, you get it on your trading view at Stocko. Just go over here, go to indicators. मैंने यहाँ हाईलाइट भी करके रखा है, जस्ट ड्रॉप इट. एक बार VWAP के ऊपर आता है, देन वो शॉर्ट टर्म जो बाउंस की आप देखते हैं ना, भले जितनी भी मंदी है, एक शॉर्ट कवरिंग आ जाता है. Again, if it breaks the VWAP, एक डाउन साइड आ जाए. So everybody, have you taken down a note in a pad VWAP? Because आपका एक क्वेश्चन था, VWAP कहाँ देखना है? In Stocko Incred Money platform, in the trading view options, or in the Stocko platform, Incred Money platform, you just type VWAP and you'll get plotted. But it only comes in the futures charts. ये cash में नहीं आता है. VWAP is about volume. In cash, you don't have volume. In any platform, I always prefer to use Stocko Incred Money. Very reliable, very fast data. That's the reason I use it. So that's something which I wanted to highlight today about VWAP. Because you see, if you are not aware of this, चले भी जितना भी मंदी है, आप एक बार जब रिवर्स करता है, if you keep on shorting, you will get stopped out intraday. So two dominant studies which right now you have to follow is, given the market condition, is one, VWAP. Second is, all moves are right now on a 5 and 15 minutes channelize. So channel बना के आप छोड़ दो. Everybody clear? Can we move next? Yes, no? Yeah, I'll just read out the question. SAS online 9:30. Okay. So ये दो चीज आपको छोड़नी नहीं है करंट मार्केट में, because volatility is contained within a channel. Volatility expands after it breaks the channel, after it breaks the VWAP. So these two things are your very important decision making points post market open. अभी ये चैनल है, पुल बैक आया, कहां तक जाएगा? चैनल के ऊपर तक. वंस इट ब्रेक्स द चैनल ऑन द डाउन साइड एंड द VWAP इज गॉन, फिर से मंदी का दौर स्टार्ट होगा. आई एम नॉट सेइंग कल गिरना ही चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट नाउ इन अ बिग वॉलेटिलिटी. 800 पॉइंट खुलता है और 400 पॉइंट माइनस बंद होता है. इट्स 1200 पॉइंट्स अप एंड डाउन. इट्स अ क्रेजी वॉलेटिलिटी. डेटी ट्रेडर्स अभी रोल रिवर्सल सब साइड में रखो सर. फॉलो द करंट प्राइस एंड द करंट वॉलेटिलिटी. Okay, so let's move next from Nifty. Already I have spent lots of time on Nifty. Was the information okay, everybody? आप follow कर सकोगे VWAP plus channel? I got only one yes. What about other participants? See, in these sessions, we will discuss whatever studies is relevant for current market conditions. Channel or VWAP are very relevant to current market conditions. आफ्टर दैट लेट्स गो टू बैंक निफ्टी एंड ओआई की बात करते हैं तो 24,500 कॉल में ओआई बिल्डअप है कॉल के साइड और 23,800 पुट के साइड. और पीसीआर अगर देखें तो 0.98 का है. स्ट्रैडल प्राइस काफी हाई है गिवन द वॉलेटिलिटी और रह गई. वी आर सीइंग द स्ट्रैडल प्राइस कंटिन्यूज टू रिमेन हाई 357. And commentary is market oversold, but don't make a mistake that oversold market has to reverse. Weak strong downtrend oversold में भी गिर सकता है. So for that reversal we'll wait for clear signs, or else we are taking one day at a time and then analyzing the markets. After that, let us go to bank nifty. So if I go to bank nifty, बैंक निफ्टी में भी आप देखो आज का जो गिरने के बाद बाउंस आया था, इट वाज आफ्टर ब्रेकिंग द VWAP. गेटिंग माय पॉइंट? तो VWAP आपको छोड़ना नहीं है. आप स्टॉको इनक्रेड मनी में यू डू गेट VWAP ऑन बैंक निफ्टी. आई विल जस्ट गो टू माय प्लेटफॉर्म. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई हैव केप्ट इट हियर. सो मैं निफ्टी को मैं बैंक निफ्टी कर देता हूँ. हाउ मेनी ऑफ विल स्टार्ट यूजिंग VWAP on Stocko Incred Money? Give me either a yes or a no. I want either a yes or a no. 100%. Okay, great. See, there are so many indicators, so many oscillators. I think गिनने बैठूंगा तो 100 के ऊपर. Are they all relevant right now? No. Everything is relevant for the given market conditions. So we pick up tools, we pick up studies which are relevant for the current market conditions. So मैं indicators में जाऊंगा. You can type VWAP. मैंने select करके रखा. I put a star mark. That means मैंने इसको favorite में save करके रखा. If you know how to do, just visit Stocko SAS online YouTube channel, and I've showed you in the trading view tutorials over here.
So that's how you get your this thing. मार्च लिख देता हूं मैं. This is Bank Nifty March futures. Can you see the VWAP, everybody, in my platform, which is Stocko Incred Money platform, trading you? If it's visible, मेरे को हाँ बोलो सब. All the traders out there, Devang, okay. VWAP आपको apply करना है. So then let's go to Bank Nifty on the daily charts. So Bank Nifty में हमने आज क्या देखा कि Bank Nifty 200 DA में it just cracked below it. And today's candle कोई बोलेगा hammer है, reversal हो गया. I would add the gap into today's candle. So I look it that way. And Bank Nifty वो gap was काफी बड़ा gap था. It was a huge gap. And again, if you see the daily charts, either your supports or your resistance are far away from the current price. काफी दूर है. तो इसमें आपको 60 minutes पे जाना है. बैंक निफ्टी में भी मैं 15 पे चला जाता हूँ. जैसा प्रीवियसली हमने देखा था, एक चैनल बन गया था गिरने के बाद, चैनल के ऊपर तक गया एंड अगेन इट क्रैक. So what we are seeing right now is the pattern of a panic declines and the pattern of a pullbacks are same. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वापस से बैंक निफ्टी में ऐसा एक चैनल बना दूंगा. So I'll take this lows, join this. Either you take this high or you can extend a channel जिसमें ये बीच वाला middle line हो जाएगा and you take it till the today's high. So now this is my channel on the Nifty. See, channel का मतलब क्या है? Till prices are contained within the channel, the pullback is on. The moment channel का low टूटता है, we have to accept that the bounce or the pullback is over. You have to confirm it with your VWAP and other technical studies. Getting it, Bank Nifty, everybody? And अगर आप देखने जाए यहाँ पे throughout this decline, if had you applied your channelized move, it would have given you a good decision making points during the day. So channels, don't ignore it. And if I go to my broader plan on Bank Nifty, the trend is down, decline is there. Resistance is 57,140. Support आज के low पे 55,270 and further at 55,000. RSI Bank Nifty is also entering oversold. OI buildup in call is 57,000, put is 55,000, which means call or put wings pair. So market is expecting a wild volatility, which is even 1,000 or 2,000 points. PCR is 0.72. Just look at the straddle price, the increase in the volatility. 2879 is the straddle price of Bank Nifty, which says that volatility is here to stay. So it's Bank Nifty is also entering into an oversold. So oversold right now. क्या हो रहा है? मार्केट मंदी में खुलता है, इतना शार्प खुलता है कि खुलने के बाद इट्स एन एग्जॉस्शन, इट जस्ट गिव्स अ पुल बैक. और गिरना होता है, इट फॉल्स द नेक्स्ट डे. बी अवेयर ऑफ इट. आज मार्केट नहीं गिरा डजंट मीन देयर इज अ लो इन प्लेस. For low in such a market, we need clear reversal patterns. One day holding a low and giving an intraday bounce is no reason for a reversal. आप एक चीज का ध्यान रखना. Okay, give me a yes, everybody. So right now you are trading a market which is in a stage of a strong decline. You are trading a market which after a strong decline is giving a pullback. So once you are trading such a market, you have to use tools like VWAP, channels, and your multiple moving average trading system. How many of aware? If you're not aware, you can visit our YouTube channel, which is Stocko SaaS Online, and you can watch the recordings both on the Trading View as well as how to trade an expiry day session is there. There I have discussed this setup of 5 moving averages, which is called multiple moving average trading system. Have you gone through it, Devang Patel or Gari Karoya 6253? Kindly confirm it to me because all the sessions are you, and make sure aap sare sessions record it, watch it. And tomorrow we have a session. If somebody wants to know about Greeks, a detailed understanding. So tomorrow kal jo main session kar raha hu at 4:30, it is about this thing.
So let me open the site. So it's on option Greeks. So I'll discuss theta and everything in detail. So make sure you visit the site. You'll find a banner and all these recording sessions are there. Make sure you watch it and be there tomorrow. Right. So that's all from my side. Before I end, that's the plan, and I read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. थोड़ा संभल के ट्रेड करो. Excuse me for my throat. और थोड़ा रुक के करो. ओवर रिएक्ट मत करो गैप अप और गैप डाउन में, अदरवाइज यू विल गेट बैडली क्रश्ड इन द मार्केट्स गिवन द वोलेटिलिटी ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन. मूवमेंट्स काफी है, गिरने के बाद भी बाउंस आ रहा, पुल बैक आ रहा. So just give yourself the first 15-30 minutes, relax, take a deep breath, have a cup of tea or coffee, और बोलो आज मैं नहीं ट्रेड करूंगा. The moment you say that today I'll not trade, आज मैं नहीं ट्रेड करूंगा, the pressure of trading is off. So you have told yourself I'll not trade. एक बार आप ये decide कर लेते हो, then the trade which comes is a very a logical trade, and you have certain degree of calmness before taking the trade. अगर खुलते आप बोलोगे नहीं मार्केट गैप डाउन है, शॉर्ट करना, लॉन्ग करना, you are in a stage of chaos yourself. ऐसे में ट्रेड आपका सही जाने वाला नहीं है. So how many of you will just take a deep breath in the morning and have a cup of tea and coffee and say मैं 15 मिनट आधा घंटा आराम से साइड में बैठूंगा? How many will do that? Give me a thumbs up or a thumbs down. Till you don't that, it's too tough to trade this market on a day-to-day basis. Yeah, I'll wait for your this thing. So Sharma ji says I do, DT Trader says I do, Rajiv says thanks. Yes, there are certain things now you'll have to do it as part of your daily routine. So that's all from my side, friends, and thanks and have a nice day. Mr. PRHLD, I think that stands for Prahlad. Prahlad ji also saying I'll do. That's great. So again, we'll meet tomorrow at 8:45 in the morning, and then we'll have the webinar from 4:30 to 5:30 on option Greeks. Thanks and bye from my side, everybody.